Okay, students, can we start with the answer now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, all right, all right. Yesterday, we have already started with levels of management. How many levels are there, students? Come on. 3 levels. Three levels are there. Which comprises of, come on. Upper, middle, lower. Okay, very nice. Top level management, middle level management and लोअर लेवल मैनेजमेंट. आपको थोड़ा सा आइडिया भी दे देती हूँ. लोअर लेवल में ना बहुत सारे लोग होंगे. ओके, मिडिल लेवल में देयर विल बी फ्यू पीपल. ओके, एंड टॉप लेवल में वेरी फ्यू पीपल. ओके, बिकॉज टॉप लेवल में कौन है? सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो कंपनी की पॉलिसीज बना रहे हैं. Okay, they are mostly engaged in framing plans and policies for the company. They are the ones who will decide which business the company should enter into. Right? We have already started, and yesterday we have completed first 3 points. You are going to tell me top titles that are allotted at top management states. Come on. CEO, President, Vice President. Very nice, Ritik. Okay, very good. So top management में कौन होते हैं? CEO, President, Vice President, Assistant Vice President, like that. And middle level में कौन होते हैं? Come on. Department manager. हाँ, okay. Very nice, Smriti. Very good. Divisional managers, departmental managers. जैसे कि production manager हो गए, marketing manager, HR manager, IT manager, है ना? तो all these departmental managers. Divisional heads मैंने आपको yesterday I have taught you this. When the company is having more branches, okay, so you are dividing and then you are appointing someone as a head. तो वो हो जाएंगे divisional managers. Not necessary अलग-अलग state में. Students, sometimes the company might have branches in the same city also. For example, South Mumbai, Navi Mumbai, suburban, है ना? तो ऐसे अलग अलग जगह पे भी within the same city also you might have different branches and you're appointing heads in those branches. They become middle level managers. And then who are at the lower level managers? Come on. Foreman, supervisor, workers Okay. वगैरह. Very nice, Smriti. Saima, very good. So there are assistant Foreman. managers, supervisors, foreman, and so on. Okay, then we move on to the point, to next point, which is nature of managerial work. क्या काम करते हैं? Top management क्या काम करता है? Come on. पॉलिसीज बनाने का. Very Policy. nice, Sarvar. Very good. So top management is into framing plans and policies. Basically, top management will decide which business the company should get into. है ना? कौन से business में company को enter करना चाहिए. Okay, then what is middle level managers doing? Come on. Interpretation of policies. वेरी नाइस. आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो. अंडरस्टैंडिंग दोस पॉलिसीज जो टॉप लेवल वालों ने बनाया है, उस पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना और बिजनेस रन करना. दिस इज व्हाट द मिडिल लेवल मैनेजर्स आर डूइंग. एंड व्हाट इज लोअर लेवल मैनेजर्स डूइंग? कम ऑन स्टूडेंट्स. To bring plan in actual form. Very good. They are converting the plans into action. Okay, so this is what the lower level managers are doing. Okay, so let us move on to point number 3, which is time frame. Okay, मतलब हर किसी को कुछ तो प्लानिंग करनी है, तो वो प्लानिंग कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? So top management is, you know, putting or making plans for how many years, students? 5 to 5 to 20 10. years. 5 to 10. Very nice. Very good. And then middle level managers, come on. 1 to 5 year. Okay, very good, Sarvar. Very good. Parnisha, right? Now? Okay. And come on, lower level managers. 1 month to Within a 1 1 year. Very good, Smriti. 1 month to 1 year. Okay, now let us move on to the next point, which is
time allotted to managerial functions. Okay, तो मतलब कितना टाइम वो लोग कैसे स्पेंड करते हैं. स्क्रीन क्लियरली नहीं दिख रहा है ना. एक सेकेंड ना, I'll take the image. It is not properly taken. Just a minute. Screen visible है students आपको? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. I think I have not shared the screen only. 1 minute. I'm sharing the screen. You will you just tell me if the screen is visible or not. Okay, I hope the screen is visible, but why I'm not able to see the picture? Okay, yes. Let us go to the next point, that is time allotted to managerial functions. Okay, who is going to read that? Okay, point number 4. Time allotted. I'm sorry, time allotted. Ritika, beta read karoge? Yes, ma'am. Okay. Wait a minute. Sure. Can I? Okay, anyone, beta, anyone. Just start. Let us not waste time. Time allotted to managerial function. The time allotted to managerial function varies at different level. The top level management spend more time in and organizing various. The lower level management spend much of their time in directing and control. Okay, so the answer is saying that top level management is spending more time in planning, organizing, है ना? And lower level management is spending more time in directing and controlling. Actually, middle level management is spending more time in your giving directions and in controlling. Okay, the lower level management is into execution. Okay, they are converting the plans into action. Okay, so आप लोग को पता होगा there are various functions of management like planning, organizing, directing, controlling, reporting, है ना? तो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. कंपनी के लिए प्लान करते हैं व्हाट द कंपनी, यू नो, व्हिच बिजनेस द कंपनी शुड गेट इनटू, और फिर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं. यू नो व्हाट रिसोर्सेज इज? आप बताएंगे व्हाट इज रिसोर्सेज? कम ऑन. Land, labor, capital. Very nice. Man, material, machine, land, labor, capital, all these are the resources of the organization. तो ये कौन organize करता है resources? Top level management. So planning and organizing is their major work. And what is lower level management doing, students? Directing and controlling. What is directing? Giving directions to the employees. है ना? Employees will never understand how they have to work. It is only when the manager is explaining them they will understand. So directing. And what is controlling, students? Controlling का ये meaning नहीं होता है employees को control करना. Controlling का meaning होता है targets के साथ में compare करना achievement को, और अगर achievement नहीं हुआ है तो rectify करना. For example, the company's target was to manufacture 1000 units of product A. Okay, but however at the month end company, अच्छा पूरा 1 month थोड़ी वेट करोगे आप रिव्यू करने के लिए. आपने 20 days वेट किया. 20 days के बाद अगर आप देख रहे हो कि खाली 500 यूनिट ही मैन्युफैक्चर हुआ है, it's then you will understand no that in 10 days time you cannot manufacture the remaining 500. अगर आपको 20 दिन लग गया है प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए 500 units, so remaining 10 days is not sufficient. Okay, so therefore you have to understand that, you know,
Controlling means you're going to compare the targets and you're going to compare the achievements. Okay, so that is controlling. I hope now you understood what is controlling. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. So what have we studied so far? Titles allotted, nature of managerial work, time frame, and then we started with time allotted to managerial function. मतलब आप कितना time कौन से activity में spend करते हो? So top management is spending more time in planning and organizing, whereas lower level management is spending more time in directing and controlling. I'm sharing the next page. Okay, just 1 minute. All right. So moving on to point number 5, which is organizational responsibility. Okay, who is reading that? Ma'am, can I? Yes, anyone. Continue. Organizational responsibility. The level of management differ in a term of organizational responsibilities. The top level managers are responsible to the shareholders, to the governments, and to the general public, whereas the lower level managers are more responsible for getting the work done from a section of employees. Okay, now listen to this very carefully. What is the responsibility of these managers who are at top level, who are at middle level, or who are at lower level? So, top level managers are responsible, first of all, to the shareholders, right? Because they're running the company, they are making the policies. You know, company में shareholders का shares है. Okay, shareholders are owners of the company, right? So top level management को responsibility है that they have to disclose the proper books of accounts, okay, and at the same time make profit, because if you're not making profit, shareholders will not be connected with you. Okay, they will withdraw their shares, right? So the first responsibility that they have is towards the shareholders. Of course, then towards the employees also, it is not written in the textbook, but top level management is also responsible towards the employees. They have to take fair decision towards the employees. Okay, they have to make proper policies towards employees. Company है ना, employees चलाते हैं. No matter आप कितना अच्छा प्लान बना लो, लेकिन वो फेल हो जाएगा ना अगर आपके एम्प्लॉइज वो प्लान को एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो, राइट? सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट योर employees are very, very important and integral part of the company. They should be taken care of. So top level management is also responsible towards the employees. Then uske baad mein towards government, that top level management, just 1 minute, Understand. Okay, and then top level management is also responsible towards the government. See, they are running the company, they are making the profit, they have to make sure that they are paying taxes to the government on time. Okay, and lastly, to the general public, students, I think the top management should be more responsible, because जनरल पब्लिक कौन होता है? आप, मैं, हम सब. जरूरी नहीं है कि हम वो कंपनी के कस्टमर्स हो. जनरल पब्लिक इज एवरीवन. Okay, so when you're running the company, you have to make sure that you're not polluting the environment. There is no noise pollution, air pollution, or water pollution, right? So you have to be very careful about all these things. So top level management is also responsible to the general public. अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? लोअर लेवल मैनेजर्स. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द पीपल. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का सबसे ब्यूटीफुल एसेंस क्या है पता है? गेटिंग द वर्क डन. गेटिंग द वर्क डन वो कैसे आप करते हो, दैट मैटर्स. आप सॉफ्ट अप्रोच रखते हो, आप हार्ड अप्रोच रखते हो, काम करवा के लेना, दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट ऑल अबाउट.
Okay, so lower level management are responsible for getting the work done from people. Any difficulty over here? No, ma'am. No, ma'am. It's a very ma'am. simple concept, but I'm going in detail because these are the basic concepts of management. आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि टॉप मैनेजमेंट का मैनेजरियल फंक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. Okay, whom are they responsible to? Sir, shareholders, to the employees, to the government, to the general public. Okay, they are responsible to everyone. Who are what are the responsibility of lower level management? Then you have to tell, sir, getting the work done from people. Okay, this is the most challenging task. See, man is not a machine. Okay, and even if I have to start a machine, I need a man. हिंदी में देखो, इंसान मशीन तो है नहीं, और अगर किसी मशीन को मुझे चालू भी करना है तो मुझे इंसान की जरूरत लगेगी. मैनेजिंग पीपल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप मशीन से ओवर टाइम कराओ, मशीन इज नॉट गोइंग टू आंसर यू कि ये क्यों मेरे को एक्स्ट्रा आवर्स काम करा रहे हो, है ना. बट वही आप ह्यूमन बींग्स एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराओ, दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू. Okay, so managing people is very difficult task. Then management is all about getting the work done from people, handling people, understanding people. Okay, and especially in the era अभी के एज में जब हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे विजिबल है, हमारा कंडक्ट हमारे एम्प्लॉयज दूसरों के साथ शेयर करते हैं थ्रू नेटवर्किंग, है ना. So it is very important that you have a good conduct and you are managing your people nicely. Okay, let us see the last point, which is managerial skills required. Okay, The levels also differ in terms of the requirement of managerial skill. The top level management requires more of conceptual skills, whereas the lower level management requires more of technical skills. okay, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यानी कि इंटेलिजेंस. कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मीनिंग क्या होता है? इंटेलिजेंट स्किल्स. ओके, यानी कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, दिमाग लगाने का काम. ओके, प्रिडिक्ट करने का काम, मार्केट स्ट्रेटेजी का काम, कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटेजी को तोड़ने का काम, ये सब कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट. whereas lower level management requires more of technical skills. technical skills यानी कि कैसे काम करना है, how to make the product. Okay, how to do the packaging, how to get it transported, how to do warehousing, how to do marketing. ये सारा टेक्निकल स्किल्स है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए. बट टॉप लेवल पीपल रिक्वायर मोर ऑफ कॉन्सेप्चुअल स्किल्स यानी कि इंटेलिजेंस. मैं ना आपको एक बहुत सिंपल वुड वांट टू टेल यू कि जो लोग टॉप लेवल पे होते हैं ना, मैंने आज तक, मैं आपको शायद पहले भी बोल चुकी हूँ लेक्चर्स में, whomever I have met at top level, जो कि कोई सीईओ है, someone who is a director of the company, who is a CEO, they are very down to earth people. Okay, बहुत down to earth, बहुत simple लोग होते हैं. Okay, because वो लोग का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होता है. I recently have seen the post on Facebook. आपने देखा होगा रतन टाटा ने कितना सिंपल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. Yes, with his manager, हाँ, with his assistant, no, manager. assistant manager. Yeah, a very young boy. Have you seen that picture? Yes, ma'am. Yes, How ma'am. रतन टाटा is celebrating his birthday. हम लोग क्या करते हैं? इतने बड़े बड़े केक लेके आते हैं, इतना डेकोरेशन करते हैं. वो केक का भी अलग अलग तरीके का डिजाइनर केक आता है, बॉम्ब केक आता है, मालूम नहीं क्या क्या आने लग गया है. You see a person who is having 1,000 crores of property and what not, and what scale of business, such a philanthropist and such a big entrepreneur of our country. And उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट कैसे किया? स्मॉल पेस्ट्री कट करके. Okay, see, this is how people at top level are. They will not do. See, you observe, कभी over dressing नहीं होता. Very simple shirt and a very simple formal pant. Okay, and then a very simple watch. Okay, people, otherwise आप देखो, there are people who spend lakhs of rupees in wearing those wristwatch. Okay, and look at them. You see Ratan Tata, very simple watch he's wearing. वो 1,000 2,000 में आता होगा वैसे वाला watch.
वेरी सिंपल आउटलुक, वेरी सिंपल, हाँ बट डिसिप्लिन, ओके, हेयर कट, ओके, अच्छा शूज अच्छे से पॉलिश रहेगा, कपड़े अच्छे से आयरन रहेंगे, बट एकदम सिंपल। दिस इज हाउ पीपल एट टॉप लेवल आर एक्सपेक्टेड टू। और मालूम है उनसे सीखना चाहिए कि दिस इज हाउ यू शुड कंडक्ट योरसेल्फ। द मोर सिंपल यू आर, okay, the more kind you are, people will connect to you. I have met Mr. MP Ramachandran sir, who visited our college for, motivating the students. आपको पता है उजाला ब्रांड, वो उजाला 4 बूंदों वाला, सुना आपने वो ब्रांड? Yes, ma'am. The company is ज्योति लेबोरेटरीज, ओके, ज्योति लेबोरेटरीज के और भी प्रोडक्ट्स है, लेकिन मैंने उजाला इसलिए रेफर किया बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर ब्रांड एट दैट। तो उनके ओनर है ना, हमारे जब कॉलेज में आए थे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, MP रामचंद्रन सर, तो उनको एक स्टूडेंट ने पूछा, सर आपने इतने कम टाइम में इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर लिया, इतना मुनाफा बनाया, how is it what was the magic? Do you think there was a luck factor or what, किसको आप क्रेडिट देना चाहोगे? You would be amazed to know the reason. Okay, he said that मैंने जब कंपनी स्टार्ट की एंड मैंने लोगों के साथ में स्टार्ट किया, मैंने टेक्निक मशीन के साथ में नहीं, आइडियाज एंड पीपल हैव कनेक्टेड मी। He said that मेरा ऐसा है, when I am working with my people, मैं उनको अपने लेवल पे ही समझता हूँ, मैं ये नहीं कि मैं ओनर हूँ और वो एम्प्लॉय है, नो, I treat them like human beings. So you know what he said, that whenever I used to visit the factory, फैक्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं ना, ग्राउंड लेवल वर्कर्स, जो लोग लेबर वर्क करते हैं, ओके, सो ही सेड दैट आई यूज्ड टू टॉक टू देम, ओके, एंड आई यूज्ड टू, जैसे अभी मुझे पता चल गया कि उसका नाम राम है, ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब मैं फैक्ट्री विजिट करता हूँ तो मैं उनको पूछता हूँ, अरे राम तुम कैसे हो, और तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन से क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? फिर वो जो राम है वो बताएगा, मेरा ये 2 बच्चे हैं, एक सिर्फ 3rd स्टैंडर्ड में, एक 2nd स्टैंडर्ड में। फिर वो बोलते हैं, मैं जब उसके बाद नेक्स्ट टाइम विजिट करता हूँ तो मैं उनको ना उनके बच्चों के नाम से बुलाता हूँ, अरे आपकी बेटी पूजा कैसी है, अच्छा उसका पढ़ाई कैसा चल रहा है। So he said, I used to do this out of love towards my employees. Okay, now you know what, when I am an employee and when I'm working at a very lower level position, okay, मतलब मैं सिर्फ केवल एक वर्कर हूँ एंड मुझे इतना बड़ा ओनर ऑफ द कंपनी, okay, मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे, don't you think that I will be like very motivated and very happy to work with that company? Yes, ma'am. This is how people at top management, the level of intelligence is not just about ideas, not just about statistics and metrics या फिर market expert, ये इसको intelligence, ये intelligence है, वो तो चाहिए आपको दिमाग, लेकिन at the same time business run करने के लिए सबसे बड़ा intelligence पता है क्या है? How to manage people. That is essence of management. जितना आप अपने एम्प्लॉइज के लिए बेटर पॉलिसीज बनाएंगे या उनके लिए जितना बेटर एम्प्लॉय ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर, लिबरल एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, दे विल स्टैंड बाय यू इन योर हार्ड टाइम्स, ओके, they are the ones who are converting your ideas into actions. You have to trust them, okay? You have to behave with them in a very desired way. So this is how मैं जितनी बार मैं repeat करूंगी, whomever I have met at top level, I have always seen they are very simple people, okay, very 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 simple people. Yeah, I would also want to give you one example. मैं जिस हॉस्पिटल में मेरा बर्थ हुआ है, which is at चौपाटी के opposite में, this the name of the hospital is रुक्मिणी लायन हॉस्पिटल। तो कुछ सालों पहले मुझे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, अभी तो बर्थ सर्टिफिकेट पे टाइम वाइम एंड ऑल इज नॉट रिक्वायर्ड, बट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि बर्थ टाइम मुझे कलेक्ट कर लेना चाहिए, तो आई थॉट कि जहाँ पे बर्थ हुआ है वहीं पे उनके पास रजिस्टर में टाइम होगा, सो बिकॉज हमारे डॉक्यूमेंट्स शिफ्टिंग में गुम हो गए थे। देन आई विजिटेड दिस हॉस्पिटल और मैंने रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि कुछ सालों पहले जब मैं कॉलेज में थी, जब मैं आपके एज में थी, दैट टाइम आई एम सेइंग,
तो मैं अपना कॉलेज फिनिश होने बाद आई विजिटेड दैट हॉस्पिटल, आई रिक्वेस्टेड द रिसेप्शनिस्ट टू कि मैम मेरे को मेरा बर्थ टाइम चाहिए था. यू नो व्हाट, हाउ डिड शी रिप्लाई मी? किधर से आ जाते हो आप लोग, क्या है ये, इतने साल के बाद में अचानक उठ के आ गया, कितने साल का हो गया है तुम, इतने साल के बाद अभी आके बर्थ टाइम चाहिए तुमको, हमारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? यू नो द वे शी shouted at me, and I got so scared and almost had tears in my eyes. Okay, और मैं पता है वो जब डांट रहे थे ना, तो हम इमेज कॉन्शियस होते हैं ना, अभी यंग एज में यही होता है कि अरे मेरे को कोई चिल्ला रहा है तो आसपास कौन देख रहा है. So I started looking around who are looking at me. I felt very bad. Okay, and immediately I left for hospital से. मैं hospital से बाहर आई, फिर मैंने सोचा ये तो बहुत correct, ये तो बहुत incorrect है ना, like somebody treating me like this. This is not done. Okay, so मैं वापस hospital के अंदर गई and मैंने वहां पे director's office देखा. Okay, so director's office में usually you need an appointment to meet the director. बट मैं वो डायरेक्टर्स ऑफिस में मैंने सिर्फ नॉक किया. ओके, तो अंदर से मुझे आवाज आया यस यू कैन कम इन. कि मे बी उसने सीसीटीवी कैमरा से देखा होगा कि there's a small little girl who is standing outside. तो मुझे अंदर ही अलाउड. ओके, मैं अंदर गई and I had a glass of water because I was crying. तो उन्होंने देख लिया, मतलब उनको पता चल गया मेरे facial expression से that there is something wrong. Okay. The director did not ask me anything. He started a conversation like this. What is your name? Which college you are studying in? क्या studies कर रहे हो आप? Okay. What do you want to become in life? Who all are there in your family? Okay. Why have you come here to the hospital? Then I informed him, sir, that I just wanted my birth time, but the receptionist out there, she scolded me very loudly, and आई थिंक इट इज कम्प्लीटली लेजिटिमेट. बिल्कुल जायज है मेरा यहाँ पर आकर अपना बर्थ टाइम पूछना. आपके रजिस्टर में जो डिटेल्स होगा ना, तो मैं यहाँ पे ही आऊंगी और किसके पास आऊंगी? मेरे पास में प्रूफ है कि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है. ओके, सो देन द डायरेक्टर कॉल्ड दैट लेडी. Okay, and he asked the lady to just give whatever I am asking for. Okay, he said just provide this little girl whatever she is asking for. Okay, वो लेडी सॉरी बोलकर फटाफट आउट हो गया. एक सेकंड, अरमान. ओके, सो वो डायरेक्टर ने मुझे हेल्प किया विद द नेसेसरी डिटेल्स and the way he behaved for that 5 minutes. Okay, मुझे इतना peaceful लगा. Okay, the way he spoke to me, the way he made me feel. Idea behind giving you this small little example is to tell you students, people at top level are usually down to earth. कि वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं और एक इंटेलिजेंट इंसान को पता है हाउ टू हैंडल पीपल. There is a way of getting the things done. Okay, you cannot be scolding and shouting all the time. Okay, you have to apply another strategy. What is important is getting the work done. Okay, what is not important is how you are getting it done. It should be ethical. That is more important. Any difficulty in this answer, students? No, ma'am. No, ma'am. ऐसा कुछ तो आपको नहीं समझ में आया और आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो. And then we will start with the new answer. But first you tell me if there is any difficulty in this answer. We have completed with levels of management. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. All right. I think we will take a very interesting answer now. That is managerial roles. Okay, there's hardly a minute left for the session to get over. I am going to send you another link in next 2 minutes and then you can rejoin. Okay, students? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, all right.